Assalamu alaikum dear students. Today class 8th, subject science. Chapter the cell. Topic diversity in cell. आज हमारा जो ये डाइवर्सिटी इन सेल, उससे पहले हमने एनिमल सेल और प्लांट सेल में सेल के बारे में पढ़ा था। उनमें जो कॉमन चीजें हैं उनके बारे में पढ़ा, जो उनमें डिफरेंसेस हैं उनके बारे में पढ़ा। So far we have considered the basic features of cell in general, but this does not mean that all cells are identical. यानी हर सेल आइडेंटिकल नहीं होती हैं। Structure like nucleus, mitochondria, cytoplasma are common to all cells, but shape, size, and contents of individual cells show a lot of variation. यानी इन चीजों में, शेप में, साइज में, इनमें बहुत ही वेरिएशन है। These features are closely linked to the function which cells perform. In a unicellular cell या unicellular organism, all functions of the body like nutrition, अब जो unicellular इसमें जो सपोज न्यूट्रिशन है, या रेस्पिरेशन है, या एक्सक्रीशन है, ये जो है इसमें एक्सक्रीशन होगा या रेस्पिरेशन होगा या ग्रोथ होगा, या रिप्रोडक्शन, यानी ये जो चीजें हैं ये सारी एक ही सेल में हो जाती हैं। किसमें? यूनिसेल्युलर ऑर्गन्स में। In multicellular organisms, however, these tasks or functions are divided among groups of cells. All the cells do not do all the jobs. This feature of multicellular organism is known as division of labor. इसी को division of labor कहते हैं। यानी अलग अलग काम, नाक का अलग काम, कान का अलग काम, आंख का अलग काम, फिर नर्व्स का अलग काम, फिर स्किन का अलग काम, फिर जो बाकी बॉडी ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं उनका अलग अलग काम, अंदर से अंतड़ियों का अलग काम, मैदे का अलग काम। तो ये अलग अलग यानी फंक्शंस, इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर बंटा हुआ है। A group of cells show variability in their shape, size, and other features depending upon the function being performed by them. Cell number. Unicellular organisms are formed of single cells. Multicellular organisms are formed of many cells, which in turn may be of many types. Even in multicellular organisms, the number of cells may vary a lot. It may be just a few, as in some algae, a few hundred, as in some algae, or several millions, as in most plants and animals. Do you know that a newborn baby has at least 2,000 million cells? Cell size. Some plants and animals
cells are visible to the naked eye. Most cells, however, are visible only with a microscope. For example, an ostrich egg is the largest animal cell. It is as big as 170 into 135 millimeter. Smallest known cell is that of, अगर हम यहां पर देखेंगे बैक्टीरियम, mycoplasma, this bacterium measures about 0.1 micron, तो मिलीमीटर, माइक्रोन मिलीमीटर, इतना छोटा है. In plant cells, some algae have very big cells. For example, an algae, Acetabularia, a unicellular organism, consists of single cell, which is about 10 centimeter in length. ये 10 सेंटीमीटर है in length. Fibrous in plants like jute and hemp are a few centimeters long. In our body, nerve cells are the largest, measure about 90 micrometers in length. Some nerve cells are longer than a meter. Some blood cells are the smallest. A living red blood cell measures about 9 micron. Most other cells are as that of kidney, liver, intestine, etc. are between 20 to 30 micrometers in diameter. अब ये सेल्स की डाइवर्सिटी हमने देखी, कितनी फर्क, कितना अंतर, कितना इनमें यानी साइज में, शेप में. What about the hen's egg? There is a central yellow part called yolk, which is surrounded by the white albumen. The yellow yolk represents a single cell. अब इतना बड़ा सेल, तो इस तरीके से हमने देखा कि सेल की शेप, साइज ये बिल्कुल ही डिफरेंट होता है. आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आगे फिर से.